learned today was that, I mean, you can like clarify Mm-hmm. this maybe. Mm-hmm. The Yeah. thing is, yeah, what I used to do is I used to create complex scenarios and used to make things like so that recruiter probably gets impressed by how complex my theory is and stuff. And in that, I used to get confused sometimes. And now also I do the same. So is it like I just take simple scenarios and explain very simply what things are like? For example, as we discussed, See, just the thing explain an is that you operator. would be able to explain complex scenarios if you know simple scenarios. When you're struggling to explain simple scenarios, how can you expect yourself that you would be able to explain a complex scenario? Because complex scenario will bring in counter questions. If you are saying that I used to practice on complex scenarios, then what complex scenario did you That's give me what to do? happened. So the thing is, everything got mixed up in the head. That's what the problem If you will is. mix up. See, you are not And the things following are what too I do. many. There are like too So many things, and so that's what I realized. And so as Kunal was really amazing what he did, and he gave perfect answers. Um, but shall we directly learn from this and by heart these definitions, and will that be like the best possible solution to this? you don't have to memorize anything. See, I am not asking any questions just to answer, just to get answers that you have memorized. You know what is DDL, what is DML. Yeah, But the delivery, the throw of your words, it should be yeah, data oriented, right? If you are giving answers which is not making an impression in my mind, then why I will hire your profile? Why not someone else like Kunal? Same answer Kunal is giving, you are also giving. You have also learned the same thing, he has also learned the same thing. But he is sticking to the basics. You are not sticking to the basics. You are sticking to something which is not even basic, not even advanced. The way is that advanced is you're not an like advanced trying level. to create a scenario kind of, So, but what you are hey, trying to uski create a zarurat. scenario, when you're trying to create a scenario out of it, it should sound like that. Correct, It should start like, you know what, in one of my previous projects, I have been, this is the scenario that you're bringing. correct, That yeah, throw, that वो राजा मौली स्टाइल में जो वो लेके आता है विजुअल्स दिमाग खराब हो जाता है वो जो थ्रो लेके आता है फिर right, right. एक्सपेक्टेशन बन जाता है इसके बाद भी और कुछ होगा सो नाउ तो इफ यू पर आर इसके ट्राइंग टू लिए या इसके लिए तो फिर आई थिंक आई हैव टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स आई मीन सम टेक अप सम एग्जांपल्स एंड कीप nothing वर्किंग you वर्किंग will वर्किंग work on projects see there is an absolute very expensive project module where you will have to work हम्म after a month maybe we'll start on that but definitely we'll work on it but the thing is that right now whatever information that you will have to present that information also right you are करेक्ट है struggling on that भारी भारी बोलने से प्रोफाइल भारी नहीं बनता ये समझ जाओ योर थॉट या प्रोसेस स्टिल लाइक अ फ्रेशर दैट रेज्यूमे में सारे टेक्नोलॉजीज लिख दिए मैंने भी कभी किया था फिर मुझे लगा क्या मैं हूँ वो वाला शब्द तो फिर मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए यू हैव टू टेक वन टेक्नोलॉजी यू कैन नॉट बी jack of all trades. You have to be master of some in the industry if you have या to survive. Few things you take, but be master. मुझे भी 10,000 चीजें नहीं आता, but जो आता है एकदम इन डेप्थ आता है, उसमें कोई मुझे हरा नहीं करता. क्योंकि उतना डीपली मैंने टाइम इन्वेस्ट किया है, तो तुम भी वही करो. तो वर्किंग ऑन सीक्वल डीपली उस पे टाइम इन्वेस्ट करो. सिनेरियोस पे देखो. सिनेरियोस अगर बता भी रहे हो, यू हैव टू डू नॉट क्रिएट अ सुपरफिशियल सिनेरियो, वेरी हाई कॉम्प्लेक्स सिनेरियो. कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में बनाओगे कैसे? सबको अभी तो किया ही नहीं अभी तक, कैसे कॉम्प्लेक्स बनाओगे तुम? If you are telling करेक्ट. that will create a complex नहीं scenario, but you कॉम्प्लेक्स have not मेरे even लिए learned, या द थिंग इज इट्स probably not so complex for me. Probably it could be complex, but there is no need only in the first place to do that. there So is no I need. should like stop doing that. Yeah, Overthinking. This happens because of overthinking that I will have to create an impression, think. Gone. that's only. Yeah. And And what bring about energy to when build you up the speak. Huh? To bring your confidence. yes. So see, this is a very difficult question to answer that how to improve the confidence. What I feel is that when you have the right knowledge, you develop the confidence. And it's not only right knowledge, when you have that ability to share that knowledge to someone, you automatically once again get that confidence. So discussion plays a very important role. In my life, it played a very important role, wherein I used to train छोटे छोटे बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंप्यूटर ये सब पढ़ा
So when I started sharing my knowledge with them, then I understood that I will become confident in sharing the information. तो इसलिए मैं पढ़ा बहुत अच्छे से सकता हूँ, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दे सकता हूँ, क्लाइंट के सामने बात बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मे बी सारे टेक्निकल चीजें मेरे को बहुत अच्छे से नहीं आता होगा, मे बी, बट मैं बेच दूंगा बहुत अच्छे से, बिकॉज आई हैव डेवलप्ड दैट स्किल दैट हाउ टू शेयर माई नॉलेज. सो इफ यू हैव टू improve your confidence level, you need to speak a lot. बात करना इंपॉर्टेंट है. सपोज तुम समझा रहे हो, ऑपरेटर ले लो, कोमल भूल गई है सब कुछ, कोमल को ले लो, बोलो कोमल मैं तुमको पढ़ाता हूँ, चलो देखो, आई विल एक्सप्लेन. That will give you confidence when Komal will say, Yes, Raja, I have understood. That gives you confidence ki, हाँ यार, whatever I have explained, she was able to understand. Automatically, you will see it will be reflected through your voice, and your face also will speak a lot. Understood. Today, everyone was answering. Besides Kunal, I did not see anyone's faces have that charm inside them. That एक smile है, एक aura है, एक positivity है. Everyone was like answering डर डर के, बाबा answer उतर जाए कहीं से. So that should not happen. It's not that you have to just complete the answer. You have to complete the answer with an impression. And that is very important in the industry. It's a little difficult, but it's not impossible. It can only happen with practice. प्रैक्टिस तो सभी कर रहे हो, तुम लोग कर रहे हो प्रैक्टिस, आई डोंट डिसएग्री टू द फैक्ट. बट मैंने बहुत मेहनत किया, बट पहले गेम में आउट हो गया. विराट कोहली को तो गाली पड़ता था, राइट? वो मारता था टेस्ट मैच में सब कैच पीछे. इतना दिग्गज प्लेयर, इतने सारे हंड्रेड्स बनाया, बट फिर भी गाली मार रहे लोग, because of that one mistake he was doing. So similarly, something is going wrong. Either you are overthinking, or you are trying to be more casual, or you are overdoing things which might not be necessary. Maybe these are some of the little elements which is actually hampering you, due to which you are getting out in the first ball. So that you need to be careful. मेरे में क्या हो रहा है कि मुझे जो समझ में आ रहा है कि आई नो दैट पॉइंट बट आई कांट रिकंस्ट्रक्ट दैट लाइन टू हाउ टू डिलीवर और समथिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? हाँ यस यस ऑनेस्टली बताओ, एवरीडे कितना यस बार यार पढ़े नहीं हो? नहीं नहीं एवरी डे? हाँ हर दिन 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं जोर जोर से पढ़ते हो, राइट? गूगल यस गूगल न्यूज में हर दिन ही पढ़ता हूँ ठीक है. तो तुम देख पा रहे हो, राइट? पहले बैच में जब तुम आए थे कुछ बोल नहीं पाते थे, अभी लग रहा है तुम कुछ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हो. तो यस टाइम लगेगा. देखो, कम्युनिकेशन बचपन से हम लोग हिंदी मराठी में बात कर रहे हैं, बट उसको चेंज करना इज डिफिकल्ट. बट धीरे धीरे करना होगा. दैट विल टेक द लॉन्गेस्ट टाइम. दैट विल ओनली हैपन बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स. तो थोड़ा उस चीज में ध्यान दे दो. बाकी थिंग्स यू गाइस आर डूइंग गुड, but please don't deviate. Don't get deviated because of any reason. That is not acceptable after spending so much money. More than money, you are spending your time. Every day सुबह 7 बजे उठ रहे हो, इससे अच्छा 1 घंटा और सो जाओ यार. बेटर. जब पढ़ाई करना ही नहीं था आफ्टर 2 मंथ्स तो सो जाते. ज्यादा पैसा है तो क्यूआर दे देता हूँ, इधर पे क्यूआर दूंगा, भेज देना. हाँ, मेरे पास कम है तो. Deep, I have यस a ब्रो. syntax is something that I'm struggling with to remember the syntax. Yes, exactly. Same with So, me is also. there any advice how we can? I mean, memorizing it would be the so. Memorize, you can't memorize syntax. If you're memorizing syntax, you will forget syntax. Or if one step, if see, it's like history. Hmm. We used to memorize that entire paragraph in history book, right? And then we used to just फट एक लाइन बीच में भूल गया, बाकी सब भूल गए. मेरे साथ ऐसा होता. One date I forgot, then बाकी सारे dates सब भूल गए. So syntax is also like the same. Syntax is like mathematics. You need to practice and always work on simple syntaxes. Easy वाले चीजें ले लो, and then on top of it build up layers. Whenever you're creating something also, do not directly write a nested function. First write the inner function. Then you think that why you wrote this inner function. Then wrap it up with a outer function. Then again wrap it up with another outer function and see how does it work. Like for example, I give that current birthday is the same date. So that syntax or the logic that you are building, someone was building a logic, illogical logic that you are building, because उसका कोई मतलब ही नहीं है. डेव डिव अगर डाल रहे हो, तुम बोल रहे हो where कंडीशन के बाद you put a date div or but date and get date, then what?
मतलब तुमने चेक ही नहीं किया, देन तुम लिख दो मंथ इज इक्वल टू दिस. That means what? You are not understanding the fact what date div is going to generate. Date div is going to give a number. So where one number, number के बाद क्या? कुछ तो होगा. Number is equal to something, another number. Number not equal to Hmm. zero. Something will be there. So there your Yes. logic fails. It is not your syntax. It's the logic that fails over there. If you have understood that what my date div is giving, the output of this date div, you could have built that overlying logic on that. Understood? So ये स्मॉल स्मॉल चीजें हैं, मतलब ये समझाना भी बड़ा डिफिकल्ट टास्क. इट्स लाइक एक चुटकुला था, राइट? एक बंदा बोलता था, उसको सब बचपन से एवरीवन यूज्ड टू टेल दैट यू आर नॉट स्मार्ट, यू आर नॉट स्मार्ट. तो वो पूछा फिर गांव में जाके, स्मार्ट कैसे बनना? तेरे पास कॉमन सेंस नहीं, स्मार्ट भी नहीं, तेरे पास कॉमन सेंस नहीं. बोला कि कॉमन सेंस है क्या चीज? तो बंदे ने दीवार पे ऐसे हाथ रखा, बोला घूसा मार. तो उसने घूसा मारा, उसने हाथ हटा दिया तो घूसा लग गया और उसका हाथ नहीं लगा. तो देखा तेरे पास कॉमन सेंस नहीं है, तो इसलिए तू कभी घूसा ही नहीं मारता. So now he's thinking that घूसा मारना might be the common sense. तो वो गया गांव में जाकर है वापस. बोला यार मेरे पास कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है. सबको बुलाया, बोल रहा कॉमन सेंस कैसे करूं? तो वो बोल रहा अपने गाल पे हाथ मार, घुसा मार. उसने हाथ हटा दिया और खुद ही गाल घुसा. हाँ, मतलब ये चीज है, कॉमन सेंस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी ट्रेन्ड टू यू. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दैट अंडरलाइंग मीनिंग बिहाइंड इट. तो सिमिलरली तुम लोगों के लिए भी, when you are building up logics, your logical ability will be different from mine. Mine will be something different from someone else. So a question can be solved in n number of ways. Now you need to understand the fact that what is that n number for you? What is that one single number for you? And then build it. You are correct. You are not wrong. But you will have to prove yourself correct. And date diff, if you have done is equal to zero, I would have been happy because you have done month. It is extracting the month. 11 आएगा. Get date से भी 11 आएगा. 11 minus 11 0. चलो current month done. Or you check the month of the hired date is equal to the month of the get date. 11 is equal to 11. That is also zero. That is also correct. So in both ways it is correct. But अगर बीच में छोड़ दोगे, where कंडीशन डाल दिया बस equal to nothing, check नहीं कर रहे हो कुछ भी, that is incorrect. Syntax, what you remember, actually where the syntax matters is the order of execution of clauses. ग्रुप बाय के पहले वेयर आना चाहिए, बाद में नहीं आना चाहिए. हैविंग बाद में आना चाहिए, पहले नहीं आना चाहिए. दीज थिंग्स दैट यू विल हैव टू प्रैक्टिस एंड रिमेंबर. वो शायद तुमको मेमोराइज करना पड़ेगा, बट लॉजिक्स यू विल नेवर मेमोराइज. वो तुम कर ही नहीं सकते. तुम 5 मैक्सिमम तुम 20 क्वेरी याद करके जा सकते हो. जो क्वेश्चन पूछेगा वो 21वां क्वेरी होगा जो तुमने याद नहीं किया. इट्स ऑलवेज लाइक दैट. सो ऑलवेज build your foundation that you know what is the path. Then how to find that path and go ahead? That is your skill as a developer. That no one can tell you. I am showing you a path. Now, how you are following that path? तुम कूद कूद के जा रहे हो या तुम वॉक करके जा रहे हो या दौड़ के जा रहे हो? That is your you as a developer. Understood? Every developers are different. How you are presenting yourself is what you need to understand. Yes. So one more question. I think Mhm. there was a question you asked to Raja, I guess, regarding identity, right? And the logic was very simple. You just need to start with one and give a difference of two, increment of two. But Hmm. my logic went into check constraint where we can give a check constraint saying so. Overthinking. So that Like what give Shantanu was telling, that I want to find out more information on it. Yes. yeah. So that is something I'm struggling with to understand the question properly and then Correct. say, making simple So scenarios complex. correct. Yeah. That is what happens when you overthink. When you, like as I mentioned, that एक query देख के मत समझ जाना इसमें सब query यूज हो रहा है या डिराइव टेबल यूज हो रहा है या सीटी यूज हो रहा है. No, if you are thinking that way, you are making it complex. I think I have shown multiple times whenever I see a query or a business requirement, I break it. अच्छा, employee name चाहिए, department name चाहिए. I break it into three, Correct, four correct. points, and then I build the model. Do the same thing here as well. The question that I asked to Raja regarding identity. First of all, construction of sentences were not that great, due to which even he has given the right answer. It was not sounding very confident to me because the terminology seed and increment was very important. Again, wrong terminology at the wrong place will change the meaning of the entire sentence. So he used length. So length is different, right? It should be increment valuation. Now again,
During the class, I gave 100, 100, 102. But here the question was, I need odd numbers. They did not ask me that it should be more than 100. Then what will happen? The recruiter will think that you are overthinking. You are making simple things complex. You won't be able to handle my client because my client will ask you simple questions only because their requirement may be complex, but the questions will be simple. You will have to understand in a simple way, and then you need to see whether some complications are there or not. So you need to break it into pieces. Okay, divide and rule works in case of SQL for me. You can think in a different way, but always try to break it into small pieces and then build up a scenario. Maybe it's a possibility I won't be able to make the entire scenario. That's fine. But at least 50-60% also, if I'm able to make it, I get a direction. फिर उसके ऊपर तो है ही chat GPT है ये है. In the industry I'm saying, but during interviews, even if first of all it won't be very complex that you won't be able to make at all. It's only 5-6 lines query. Industry queries are like 200-300 lines minimum. So 5-6 lines queries, there is nothing called as you won't be able to do it. Once you are able to make this base underlying things, you would be able to make on top of it. But that base only, if you're struggling, then how will you be able to make the queries inside it? थोड़ा है observations is important over here. तुम देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, तुम देखो कोई और कैसे बना रहा है. अगर if you are using chat GPT, तो check in chat GPT what query you have written, that is written. Just देख के मत बोला ये तो easy है. No, सोचो तुम्हारा क्यों easy नहीं हुआ वो. तुम्हारा बना नहीं इसलिए तो तुम चैट जीपीटी देख रहे हो. क्यों नहीं बना, वो गैप कहाँ पे. अपने आप से बात करते रहो तो समझोगे वो चीज. और सिंपल तरीके से ही सोचो. कॉम्प्लेक्स तरीके से सोच के कोई फायदा नहीं है. इट विल नॉट रिजल्ट what you are thinking. And in industry, when you go for interviews, they will not ask you any complex statements. They will ask you simple statements and they will constantly challenge your basics, your foundations. That is something you need to work, understand, and deliver. Got it. Okay, cool. Anything else? So Okay. Deep, I have one question. Like जब आप Mhm. कुछ पूछते हो कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे, तो मैं थोड़ा डाइवर्ट हो रहा हूँ कि क्या क्या मुझे रिट्राइव करना है, वो कैसे थोड़ा उसमें So थोड़ा scenario-based questions can be n number of questions. Then scenario, everything that I have asked is a scenario. Whenever I have asked that, give me the sales invoices, 60 days purana, that is a scenario. Now, again, as a developer, you need to understand the importance of tables and the field names inside it. So your expectations will be that when you are writing a query, you should be हाँ, able to basically pinpoint the right field names. That is very important. Pinpointing the right field names. And that field names will be a fictitious name that you are giving to a fictitious table. And that should be relevant to the context of what the recruiter is telling. And when you're practicing the scenarios, then you will just go to ChatGPT, type over there, give me 20 scenario-based questions and answers on date functions. You will see 20 scenarios are coming. You will get to work on it. Then you are working on subquery 20 scenario-based questions and answers on suppose say direct table, suppose common table expression, suppose say scalar subquery, code later subquery. Just give the topic, you will see all the questions are coming. Those are scenario-based questions. ओके. Sir, Understood? Yes. after these two projects that we do, then what has, I mean, you have taught so many students, right? So are you sure, what was your view on that? Like, did students like really learn after that and they were like nailing the interviews after those two projects? मजा मतलब आएगा ना इस तुमको प्रोजेक्ट करने के बाद. इस पेस पे तो दो प्रोजेक्ट्स के बाद I hope I'll at least be able to speak like, I don't know, You will not be really. able to speak. Projects are much more Power BI oriented rather than SQL Okay. oriented. Obviously, will be there composite primary key use case, discrepancy checks. So all the key Yeah. elements. See, the thing is that I give you that ingredient. Right. How you utilize it, it's yours. Right? Suppose one question I asked, metadata information. You're not able to sell. So you're missing the point. तो एक बात शेयर करूँ क्या आपसे? हाँ बोलो ना. when you point blank पे जब पूछते हैं आप, तो सच्ची में
ब्लैंक हो जाते हैं सर। आई डोंट नो अभी हम्म अभी हम्म है या पता नहीं, पर पॉइंट ब्लैंक पे जैसे कि उस टाइम पे आपने कुणाल से पूछा, फिर उसके बाद मेरे पे आया, देन आई हैड सम टाइम टू थिंक एंड देन आई कुड आंसर, एंड आई हैव ऑब्जर्व दैट मतलब पॉइंट ब्लैंक पे एकदम 1 सेकेंड, सो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक थिंकिंग अ लिटिल, बट उस पे भी देन यू प्रेशराइज्ड कि नहीं करना है, देन आई वाज लाइक गेटिंग अ वेरी, अभी फिर बाद में होगा। थोड़ा सा एजिटेशन आया, बट आई आई थिंक ये अभी स्टार्ट है, एकदम सीख रहे करके, इसलिए प्रोबेबली दैट कुड बी नहीं, द इशू। सीक्रेट देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्रिएटिंग अ टफ एनवायरनमेंट ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। आई एम क्रिएटिंग अ टफ एनवायरनमेंट, आई एम प्लेइंग विथ योर ब्रेन। तुम मेरे को सहन कर लो, गाली तो चार चलेगा, बट मुझे एक बार तुम सहन कर लोगे ना, तो बाद में जाके लाइफ में कभी भी किसी से डर नहीं मिलेगा। और वही मैं यहाँ पे सिखाता हूँ कि मेरे को तुम झेल लो बस, फिर बाद में किसी को झेलने के लिए उतना दिक्कत नहीं आएगी, चाहे मैनेजर कितना भी खड़ूस हो। ये मेरे को एक मैनेजर ने डायरेक्टली तो नहीं सिखाया, पर वो मेरे माइंड के साथ ऐसे खेलता था। मैं घर अच्छा। जाके रोता था, वाला साला क्या बन रहा है, ऐसा कर रहा है मेरे साथ, ऐसे कर रहा है। अब मैं समझता हूँ कि उसने एक्चुअली क्या बना दिया मेरे को, इतना स्ट्रेंथ दे दिया मेरे दिमाग में कि अभी मुझे किसी से डर नहीं लगता। चाहे कितना भी हाई पोजीशन का डायरेक्टर आ जाए, सीईओ आ जाए, सीईओ आ जाए, आई विल बी एबल टू हैंडल देम वेरी वेल। एंड आई रियली थैंक दैट पर्सन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। उस टाइम पे गाली देता था, बट अभी मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ और ब्लेस करता हूँ उसको कि उसने मेरे को ऐसा बनाया। सेम थिंग आई एम ट्राइंग टू डू, नॉट लाइक द वे ही डिड, यूज्ड टू अब्यूज मी अ लॉट, but not in that way, but playing with your mind, that strength now. Difficult scenarios face कभी, if I'm asking what is happening, tell me. Because industry में, there will be people who will come and will be standing on your shoulders and will ask you, ETA क्या है? This is the requirement I'm giving you today, and बोलेगा ETA क्या है, बताओ ETA क्या है? Estimated time of what? What is the अराइवल। correct? Estimate time of arrival, कि कब तक मैं सोचूंगा कि तुम्हारे से ये आ जाएगा मेरे पास, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, साला अभी दिया है, अभी ETA मांग रहा है, देखा भी नहीं अभी तक। बट तुमको देना ही पड़ेगा, बिकॉज लाइफ कॉल पे सबके सामने पूछ रहा है, ईटीए क्या है, ईटीए क्या है, हुआ क्यों नहीं, तुमने तो ईटीए ये बताया था, हुआ क्यों नहीं। तो दीज आर अनकंफर्टेबल सिनेरियोज इन द इंडस्ट्री। तब कैसे डील करोगे? और तुमने यहाँ पे झेल लिया, दीज आर अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आई एम आस्किंग, व्हाई यू आर ट्रेनिंग देयर, व्हाट इज दिस, टेल मी, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई यू आर नॉट एबल टू डू इट? So these are uncomfortable, and the reasons you also know, I also know, but still I'm asking the reason to you, so that you can handle that situation. And once you develop that strength in your brain, and that you mentioned point blank, that is point blank, because उसने सर पे ट्रिगर रखा है, एंड तुमको हाँ। कॉन्फिडेंटली बचना है उस गोली से। अभी कैसे बचोगे वो तुमको बताया कि सही आंसर दो, बेताल की तरह सही आंसर दोगे तो ही मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं मेरे सर के ऊपर ही बैठूंगा। तो वही बात है। सो दिस इज पॉइंट ब्लैंक, इफ यू आर गेटिंग टाइम, वो तो फिर तो इजी हो गया वो। रिक्रूटमेंट, नाउ थिंक फ्रॉम अ रिक्रूटमेंट पर्सपेक्टिव। पॉइंट ब्लैंक क्या है कि कॉल्स ज्यादा नहीं है, दूसरा अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा पता नहीं। पॉइंट ब्लैंक का सेकंड ऑप्शन क्या है, अगर नहीं हुआ तो कूलिंग पीरियड में चलेगा, 3 महीना तो ये कंपनी मेरे को पूछने वाला नहीं। पॉइंट ब्लैंक क्या है, तुमको सैलरी भी सही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिलेक्शन हो गया और मेरे को बस 10 लाख रुपए दे दिया, टारगेट है 15 का, 10 मिल गया, 5 लाख का लॉस। लास्ट पॉइंट ब्लैंक क्या है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा डी मोटिवेशन फैक्टर बहुत हो जाएगा, यार इतना पढ़ के गया, कर नहीं पाया। तो उस टाइम पे तो इतने सारे पॉइंट ब्लैंक है, तुम एक छोटा सा पॉइंट ब्लैंक नहीं हैंडल कर पा। यहाँ पे या you have nothing to lose, everything to win. Either you will get some scolding, but you will learn, or I will appreciate it. You will understand that I'm in the right path. वहां पे तो ना तुमको स्कोल्ड करने वाला, ना तुमको फीडबैक देने वाला। तुमको लगा मैंने तो सही आंसर दिया, बट साला लिया नहीं मेरे को, ऐसा ही सोचोगे तुम। बट क्या गलत किया तुमको पता भी नहीं चला, बिकॉज नो वन इज देयर टू गिव यू फीडबैक। नॉट इवन इंस्टीट्यूट्स, इवन इफ यू पे lakhs, they will not give you a feedback that Shantanu, where are you going wrong? They will say that you are wrong. But where are you wrong? What could have been done better? No one is focusing on that area. So that is point blank once again. That is the importance of point blank here. Because if you are able to face these things and you become mentally strong, automatically you will be flourishing in life. It's not just for your next job. I'm not training here for your next job. This is for your life. Every time you work in the industry, you will remember me and you will at least say a small little thank you. "अरे यार, दीप, सही था."
आज यूज हो गया, मे बी 10 साल बाद यूज हो रहा है, बट यूज तो डेफिनेटली होगा। हम्म, अंडरस्टूड। डोंट वरी, कुछ नहीं होता, सबको जॉब मिल जाएगा, जॉब इज नॉट डिफिकल्ट। जस्ट यूज द three ingredients wherever I'm saying. The हम्म, first question I asked you, what is RDBMS? You listen to yourself, you look at yourself what you are answering. तुमको समझ में आ yeah. जाएगा कि वो तो पॉइंट ब्लैंक था ही नहीं, तुम क्या दे रहे हो, आंसर्स का मतलब ही नहीं बनता यार, राइट? सो वही, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर दैट यू कैन रिटेन एंड देन फ्रेम। बट डरो मत किसी से, मेरे से डरने वाली बात नहीं है, क्या डर, मैं क्या कर लूँ, खा जाऊंगा क्या इधर से, आप क्या करूंगा तुम? Yeah. डरना तो वहां पे चाहिए जहां पे तुम्हारा कुछ लॉस हो, जहाँ पे तुम्हारा गेन हो रहा है हर एक चीज, तो डर क्यों है उसमें? मैक्सिमम क्या होगा, क्लास के सामने थोड़ा डांट लूंगा, ऐसे ही सब सब डांट खा रहे हो तो तुम भी क्या ऐसा अलग कर रहे हो? डांट खाने से ही थोड़ा ट्रैक में आते हैं। देखो मैं अगर नहीं, मैं डांट के भी अगर ट्रैक में लेके नहीं आ पा रहा हूँ, सोचो अगर मैं लीनियंट रहता तो, अमूल की तरह हम्म, अगर मैं बिहेव करता, अरे ठीक है कोई नहीं, चले चलने दो, तो कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। तुम बाद में जाके बोलते हैं अरे यार हमारे पास तो फोकस ही नहीं था, हम लोग फोकस ही नहीं करते थे, हम लोग, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू गिव दैट रीजन। हम्म, वी ऑलवेज पिन पॉइंट टू अदर्स, बट चार उंगली अपने पास भी आता है, बट जिस दिन तुमने चार उंगली देख लिया ना अपने ऊपर, तब तुम ट्रैक पे आ जाओगे। दैट इज वॉट यू नीड टू लर्न। इसलिए मैं कभी किसी को पॉइंट आउट नहीं करता हूँ कि तूने नहीं किया, तू खराब है, वो खराब नहीं, मैं सही हूँ। इफ इनर सेल्फ इज टेलिंग कि हाँ मैं सही हूँ, किया है मैंने ठीक ठाक, फिर भी नहीं हुआ तो मेरा गलती है, मैं करता हूँ उसको ठीक। तो थोड़ा ट्रैक पे रहो, कितना पैसा इन्वेस्ट किया हो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा लेके अगर किसी का हो नहीं रहा है, करो थोड़ा, हो जाएगा। अरे ना होने की वाली बात है, नासा में थोड़ी जा रहे हो काम करने, हम्म, एक बैठ के एक रिपोर्ट बनाओगे, फालतू बना रिपोर्ट, 2 साल बाद बोर भी हो जाओगे, बोलोगे यार यार ये क्या चल रही है, बकवास है इसको, कुछ नहीं। Yeah, thank you. ठीक है, करते रहो अच्छे से, लेट्स सी। आई एम स्टिल होल्डिंग सम नाइस थॉट्स फॉर यू गाइस, बिकॉज यू गाइस आर फेसिंग योर फियर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग आते ही Yes. नहीं है क्लास में बिकॉज दे don't want to face the fears. You are facing your fears, your first step is done, and that is the toughest step. शार्क टैंक में एक बंदे ने क्या बोला था, 0 से 1 करोड़ तक पहुंचना सबसे डिफिकल्ट होता है, और जिस दिन तुम 1 करोड़ पे पहुंच जाओ, 1 से 3 करोड़ पहुंचना बहुत फास्ट होता है। मैं अपने लाइफ में भी वही चीज देखा है, 0 से 1 करोड़ पहुंचना मेरे लिए सबसे टफ था, बट 1 से कितना करोड़ पहुंचे वो वॉज वेरी इजी फॉर मी। सो सिमिलरली इट विल बी फॉर यू गाइस एज वेल। यहाँ से जस्ट नेक्स्ट इंटरव्यू क्रैक करना विल बी डिफिकल्ट, वो अगर हो गया ना, फिर उसके बाद लाइफ विल बी सेट, फिर सोचने वाली बात नहीं। ठीक है, चलो। Deep, will we have one more Viva? Final one viva will be there, which will be a grand viva, which will cover everything Okay. after this. Okay. Next, we will start with joins and joins, then subqueries, then indexes, different objects that we'll learn, and then we will start with the project. What's the status for your yeah, Power BI? Charts are going on still. Almost completed charts. Almost Charts are completed. almost Yes. done. Yes. When the DAX will get started, that is the actual important portion in Power BI. Charts सब लोग बना लेते हैं, Mm-hmm. DAX बहुत ध्यान से करना भाई। It's similar to the functions that you have learned in SQL. चैट जीपीटी में जाना, अमोल ने अगर एक फंक्शन करवाया, 20 questions on the scenario based questions on that particular DAX, and solve it by yourself. Please Okay. practice DAX really very well, because that is your selection point in Power BI as well. Got it. Understood? Okay. Ask questions as much as possible to Amol to get more informations. Okay? पावर क्वेरी Okay. एफ भी सीखेंगे क्या? ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा नहीं चाहिए होता है इसमें। ओके। पहले हम लोग करवाते थे बहुत डिटेल्स में, अभी हम लोग थोड़ा उसको मिनिमाइज करके फैब्रिक ज्यादा कर रहे हैं, दैट विल बी योर पॉइंट ऑफ सिलेक्शन। फैब्रिक ओके। ज्यादा अच्छे से करो rather than this. Okay, cool. Happy? Understood where you guys are lacking. So Yes. from Friday, Yes. we're gonna start with joins again, and let's begin our usual sessions and to join the live sessions if possible. Yes. Yeah. Okay, guys. Thanks. Yeah. Thanks, everyone. Thank you. Bye Thank bye. Thank you. you, Deep, Bye. for your time.